नमस्कार, मैं समीर माछवे हमारे इस फिंदास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम वॉरेन बफे के लिखे एक आर्टिकल पर चर्चा करेंगे। कुछ दिन पहले मेरे हाथ एक वॉरेन बफे का लिखा आर्टिकल लगा। ये आर्टिकल पढ़ के मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं उस चीज को आपके साथ भी शेयर करूं। 9 फरवरी 2012 में लिखे इस आर्टिकल में वॉरेन बफे ये बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में किया गया निवेश और सारे दूसरे निवेशों से कैसे बेहतर है। आज के इस वीडियो में हम वॉरेन बफे ने बताई हुई सारी बातों पर विस्तृत चर्चा करेंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। In the beginning of this article, Warren Buffett looks at the conventional definition of investing. He says that investing is often described as the process of laying out money now in expectation of receiving more money sometime in the future. However, Warren Buffett himself looks at investing as foregoing consumption today, now, in order to have the ability to consume more at a later date. वॉरेन इस आर्टिकल में 3 इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है अपना सबका प्रिय बैंक एफडी। आमतौर पर यह निवेश काफी सुरक्षित माना जाता है। द फ्लक्चुएशंस और द वोलेटिलिटी में बी लो इन सच फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, बट द रिस्क इज एक्चुअली हाई। दैट इज व्हाट वॉरेन बफे सेज। ज्यादातर लोग इस रिस्क की भनक भी नहीं रखते, वो ये मान के चलते हैं कि ये सब सुरक्षित है। वॉरेन बफे पॉइंट्स आउट द फैक्ट दैट ओवर द पास्ट सेंचुरी these instruments have destroyed the purchasing power of investors in many countries, even as the holders of these investments continue to receive the timely payment of their interest as well as the principal. This ugly result, he says, moreover will forever recur. The inflation in consumer prices in India has averaged around 8% per annum since the year 1980. पिछले 40 साल में अपने देश में महंगाई का औसत स्तर 8% रहा है। इसका मतलब आज जो चीज आप 1000 रुपए में खरीद सकते हो, वही चीज खरीदने के लिए 9 साल बाद आपको 2000 रुपए लगेंगे। मतलब पैसे की चीजें खरीदने की ताकत 9 साल में आधी रह जाती है। द बाइंग पावर ऑफ रूपी बिकम्स हाफ एवरी 9 years or so. What this also means is that you will need a tax-free return of investment of 8% just to maintain your buying power. One would be foolish to consider any interest earned up to 8% as their income. अगर आपके निवेश पर 8% मुनाफा होता है, तो इससे सिर्फ पैसे की खरीदने की ताकत बरकरार रहती है। Now, if you generated this income from a fixed income instrument, so-called safe investment, you will also be taxed, making the situation even worse. Let's also take a look at some of the data. The 10-year Government of India bonds yield has come down from a high of 14.76 in April 1996 to 5.88 in November 2020. It has remained below 8% since the year 2002, meaning that it has not produced any real income for the investor since then. कई लोग ये सोचते हैं कि उनका सबसे बड़ा खर्चा टैक्स है। However, ignoring the impact of inflation could be a financial disaster in the long term. आज के दिन में तो इंटरेस्ट रेट इतने कम हो चुके हैं कि अभी एफडी में अपना पैसा रखना यही सबसे बड़ी रिस्क लेने जैसा हो गया है। Further, Warren Buffett compares the second major category of investments involving assets that will never produce anything, but they are purchased in the buyer's hope that someone else, who probably also knows that these assets
will forever be non-productive, will pay more for them in future. यहां पर वॉरेन बफेट एक सुंदर उदाहरण देते हैं। साल 1636 में डच लोग ट्यूलिप फूलों के पीछे ऐसे ही दीवाने हो गए थे और इन फूलों की कीमतें 4 महीने में 5 गुना बढ़ गई थी। द इन्वेस्टमेंट that do not produce any real value requires an expanding pool of buyers who in turn are enticed because they believe the buying pool will expand still further. Warren further said that the owners are not inspired by what the asset itself can produce. It will remain lifeless forever, but rather by the belief that others will desire it even more avidly in future. The major asset in this category is gold, and it is currently a huge favorite of investors who fear that almost all other assets, including the paper money, is very risky. As per Buffett, gold has two significant shortcomings: being neither of much use nor procreative. True, gold has some industrial and decorative utility, but the demand for both these purposes is both limited and incapable of soaking up the new production that happens every year. Meanwhile, if you own 1 kg of gold for an eternity, you will still own 1 kg at its end. आमतौर पर यह देखा गया है कि दुनिया में जब जब डर का माहौल बनता है या अनिश्चितता बढ़ती है तो सोने की कीमतें बढ़ जाती है, जो पिछले 2 साल से देखा गया है। अमेरिका और चीन के बीच का तनाव और उसके बाद कोरोना बीमारी का प्रकोप, ये सोने की कीमतें बढ़ने के 2 बड़े कारण हैं। गोल्ड प्राइसेस हैव कंसिस्टेंटली रिजन फ्रॉम अबाउट 1060 USD per ounce in August 2018 to a high of 2075 USD on 7th August 2020. Thereafter, the prices have come down to sub 1900 levels once the corona vaccine news have started to trickle in and also the suspense over the US election has ended. वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि लोग सोना ये समझकर खरीदते हैं कि ये खौफ का माहौल लंबे समय तक बना रहेगा, जिसके कारण और भी डरे हुए लोग इस सोने को इससे ज्यादा कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। वॉरेन बफेट की राय में ये डर की पार्टी ज्यादा समय तक नहीं चल सकती और आज की सोने की चाल देखकर तो यही लग रहा है। आज अगर आप सोना खरीदने के लिए उत्सुक हो रहे हो तो फिर एक बार विचार कीजिए। ऐसे औने पौने दामों पर सोना खरीदने का क्या सही में कोई मतलब बनता है? अपने इस आर्टिकल में सोने की तरफ देखने का एक बहुत अलग नजरिया वॉरेन बफेट हमें देते हैं। उसके बारे में उनके ही अपने शब्दों में वे क्या कहते हैं, ये मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अलग से दिया हुआ है, आप उसे भी जरूर पढ़ लें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर आप ये काम अभी कर लीजिए। लेटर वॉरेन बफेट टॉक्स अबाउट हिज ओन प्रेफरेंस, द थर्ड कैटेगरी, इन्वेस्टमेंट्स इन प्रोडक्टिव एसेट्स, वेदर बिजनेसेस, farms or real estate. Ideally, these assets should have the ability in the inflationary times when the inflation is increasing to deliver output that will retain its purchasing power while requiring the minimum of new capital investment. Even so, these investments will remain superior to non-productive or the fixed income instruments. Warren Buffett says whether the currency a century from now is based on gold, seashells or shark teeth or a piece of paper like today, people will be willing to exchange a couple of minutes of their daily labor for a Coca-Cola or some other product of consumption. In future, the US population will move more goods, consume more food and require more living space than it does today. And there is no reason for you and me to believe that this will not happen in India and most other countries also. People will forever exchange what they produce for what others produce. That's what we know as business. Our country's businesses will continue to deliver goods efficiently and services
wanted by our citizens. Metamorphically, these commercial cows will live for centuries and give even greater quantities of milk to boot. Their value will be determined not by the medium of exchange, but rather by their capacity to deliver milk. Proceeds from the sale of this milk will compound for the owners of the cows, just like they did during the last 42 years alone, when the Bombay Stock Exchange Sensex grew from a value of 100 to Friday's closing value of 43,443. And do not forget that a few thousand crores of dividend has already been paid to investors over these years. In the end, Warren Buffett tells us very clearly that Berkshire's goal will be to increase its ownership of first-class businesses. He says that our first choice will be to own them in their entirety, but we will also be the owners by way of holding sizable amounts of marketable stock. He believes that over any extended period of time, this category of investing will prove to be the runaway winner among the three that we have seen so far. More important, it will be by far the safest. वॉरेन बफे के इस आर्टिकल में मैंने ये सीखा कि अच्छे बिजनेस में ही पैसा बना है, आज भी बनता है और कल भी बनेगा. हम सबको ऐसे बिजनेस में निवेश करना होगा. Else, running after the so-called safe investment, we are taking a big risk by losing the buying power of our money over time. आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक ऐसे मकाम पर खड़ी है जहां से हम एक विकसनशील राष्ट्र से एक विकसित राष्ट्र में तब्दील होने जा रहे हैं और इसे अब कोई नहीं रोक सकता. आप ये मानते हो या नहीं मानते हो, आपको अर्थव्यवस्था की दिशा समझ में आती है या नहीं आती है, वेदर यू बिलीव इट और यू डोंट बिलीव इट, India is on its way to become one of the best economies in the next decade starting 2021. Not investing in the businesses of this country, not investing in the equity markets at this juncture could be, according to me, the biggest mistake you can do with your money. If you have any doubt in your mind whether your money will grow over the inflation rate in the equity markets here, I will present to you some statistics as a food for thought. I am mentioning the stock prices of just a few well-established businesses in our country and how the money of their investors has grown in just last 8 years between the year 2012 and November 2020. Dr. Reddy's lab, its stock price has grown from 1569 to 4856 with a CAGR of 13.38%. Asian Paints, its stock has grown from rupees 450 to 2180 with a CAGR of 19.16. HDFC Bank, grown from 213 rupees to 1358 with a CAGR of 22.85. HDFC, the housing loan giant, stock grows from 650 to 2306 with a CAGR of 15% per annum. Kotak Mahindra Bank, its stock has grown from 210 to 1763 with a CAGR of 26.67. Nifty has grown from 4636 to 12719, a CAGR of 11.87, and Sensex from 15517 to 43443 with a CAGR of 12.08. For the common investor, equity mutual funds remain the safest and the easiest way to access the stock market. That's the way to invest. आज के लिए बस इतना ही. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. Please do not forget to subscribe this channel and hit the bell icon. Thanks for your support and encouragement. We shall meet next Monday with another such video with a topic that will help you become a financially literate investor. फिंदास को फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी. जल्द ही मिलते हैं. शुक्रिया.